Hello students, in today's video we are going to discuss about the changes in a state of matter. So heating and cooling can change the substance from one state to another. दो चीजें हैं, एक क्या है heating and the second one is cooling. Alright, if you heat something, it's going to change the substance. If you cool something down, it is also going to affect that matter. Okay. So we learned about three different types of matter, that is solid, liquid and gas. Now we are going to learn with an example कि किस तरह अगर एक matter form of matter पे हम heat apply करते हैं तो how does it changes into another one, and same goes for the cooling part. All right, so let's talk about a matter that can be converted into both states, and that is an ice cube. All right, ice cube की example लेंगे, and you know that when you freeze the water it becomes solid, and in that solid you can see the particles are actually very tightly close to each other. अब क्या होता है कि when you apply heat, इस ice cube पर जब आप heat apply करते हो it changes into liquid. In this case ये किस चीज में change हो जाता है, it changes into water. ठीक है, let's draw some water over here. ठीक है, so when you apply heat on the ice cube it changes into water. और उस चीज को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग. ऑलराइट, जब आपका वाटर यानी एक लिक्विड स्टेट में चेंज हो गया है देन व्हाट हैपेंस कि अगर आप इस लिक्विड को फर्दर हीट अप करते हैं, इसको क्या करते हैं और हीट अप करते हैं, देन इट चेंजेस इनटू गैस. यानी कि पानी के क्या बनने लग जाते हैं, वाटर वेपर्स बनने लग जाता है. ठीक है, इस तरह. और इन वेपर्स को हम क्या कहते हैं कि दिस इज अ गैस, राइट. एंड द प्रोसेस through which the liquid is converted into gas is actually called evaporation. alright, अच्छा जी, अब इसी तरह अगर हम कूलिंग वाली साइड पर आए एंड वी कूल डाउन दिस गैस, ये जो वेपर्स हैं इनको हम कूल डाउन करते हैं, then when we cool it down it changes back into what, liquid form. It changes back into water. So this process is called condensation. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम कंडेंसेशन कहते हैं, जिसमें गैस दोबारा कन्वर्ट हो जाए लिक्विड में. राइट, इसी तरह जब हम और कूलिंग अप्लाई करते हैं लिक्विड पे तो क्या होता है कि लिक्विड चेंजेस बैक इनटू सॉलिड, एंड दिस प्रोसेस इज एक्चुअली कॉल्ड फ्रीजिंग. सो दैट मीन्स कि वाटर जो है वो दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ice cube में, and ice cube is a solid, right? So these are the methods that are used to convert these uh, state of matter into different states. I hope you guys have understood this. Let's move on to the next slide. So basically there are two different types of changes that happens. First is physical change and the second one is chemical change. So in physical change, matter changes form but नॉट केमिकल आइडेंटिटी. यानी कि मैटर जो है, कोई भी चीज़ जो है वो अपनी शक्ल चेंज कर लेती है, फिजिकल फॉर्म चेंज कर लेती है, बट अपनी कंपोजिशन यानी केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं करती. फॉर एग्जांपल अगर आप आइसक्रीम की एग्जांपल लें, एंड व्हेन इट मेल्ट्स डाउन इट्स एक्चुअली अ फिजिकल चेंज, और आप उसको दोबारा फ्रीज भी कर सकते हैं, राइट. So what happens with the ice cream is it melting is actually the physical change. इसी तरह अगर आप किसी चीज को boil करते हैं तो it stays the same, the thing stays the same in physical form and the change is actually happening. So क्या होता है कि इसमें physical change इस चीज को हम कहते हैं. इसी तरह अगर आप कोई चीज chop कर रहे हैं, किसी चीज को काट रहे हैं, ठीक है, so it stays the same लेकिन उसकी shape change होती रहती है. ठीक है, इसी तरह we take the example of shredding. Shredding means आप
पेपर को टेयर अप कर रहे हैं, अगर आप पेपर को फाड़ देते हैं, तो इट इज़ गोइंग टू बी सेम पेपर, बट वो क्या होगा, उसकी फिज़िकल चेंज अम, उसमें आ जाएगी, ठीक है? इसी तरह अगर हम मूव करते हैं सेकंड टाइप ऑफ चेंज में, और वो क्या है, केमिकल चेंज। केमिकल चेंज फॉर्म्स न्यू प्रोडक्ट्स। केमिकल चेंज में क्या होता है कि न्यू प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कंबस्शन अगर करते हैं हम अगर फायर लगाते हैं वुड्स को, राइट? तो क्या होता है कि वो जो वुड है, वो चेंज हो जाती है जलने के बाद एशेज़ में, ठीक है? और ये क्या है, एक केमिकल चेंज है, यानी टोटली न्यू चीज़ बन जाती है। इसी तरह अगर हम रस्टिंग देखें, तो ये क्या होता है कि आयरन के ऊपर रस्टिंग आ जाती है, और इससे क्या होता है कि ये आयरन को ख़राब कर देती है, ठीक है? सो दिस इज़ ऑल्सो ड्यू टू सम काइंड ऑफ केमिकल चेंज, और ये एक न्यू ही प्रोडक्ट बना देती है। इसी तरह डाइजेशन अगर देखें हम, तो हमारे फूड जो है वो हमारे स्टमक में जाता है, एंड इट इज़ ब्रेकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, ठीक है? और दिस ऑल हैपेंस ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू अ केमिकल चेंज, ठीक है? इसी तरह अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें रॉटिंग की, रॉटिंग का मतलब होता है किसी चीज़ का ख़राब हो जाना, राइट? तो ये भी क्यों होता है, ये कोई वेजिटेबल हो गया, कोई फ्रूट हो गया, इफ यू कीप इट आउटसाइड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। इट्स एक्चुअली नॉट a physical change, it's actually their chemical change that happens from their inside, and it forms a new product. So this is what the chemical changes are. I hope you guys understood this video. See you guys in the next one.